The next one is detection of oxygen. Oxygen can be detected in organic compound in three different ways. The first one is ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर हम हीट करें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर उसकी कंबस्शन से वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं तब ये शो करेगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसमें ड्रॉपलेट्स नहीं बन रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। देन हम दूसरे टेस्ट के लिए जाएंगे। तो दूसरा टेस्ट क्या है? परफॉर्म अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेरियस oxygen containing group such as hydroxyl, carboxyl, aldehyde, nitro group etc. अगर इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होता है तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंफर्म होती है, अदरवाइज ऑक्सीजन कंफर्म नहीं। थर्ड टेस्ट इज द determine the percentage composition of all the elements present in the compound by combustion analysis method। अगर वो जितने भी कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका सम 100 है या उनकी जो परसेंटेज है वो 100 है, तब हम कहेंगे उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर वो 100 से लेस देन से 90 है तो उसमें 10% ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। फॉर डिटेक्शन ऑफ हेलोजन लेट्स सी अ वीडियो। Detection of halogens in an organic compound. There are many organic compounds containing halogens such as fluorine, chlorine, bromine, and iodine. They are called organohalogen compounds. Some commonly known examples are carbon tetrachloride, chlorofluorocarbons, DDT, iodomethane, and bromobenzene. Upon fusion with sodium metal, the halogens in the organic compound are converted to ionic sodium halides. Ionic sodium halides can be extracted by boiling the fused mass with distilled water and are used for the detection of halides. Our aim here is to detect the presence of halogens in an organic compound. There are two tests to detect the presence of halogens. They are silver nitrate test, carbon disulfide test. Silver nitrate test. Materials required: Lascine's extract, concentrated nitric acid, silver nitrate solution, ammonium hydroxide solution, test tube, droppers, test tube holder, and Bunsen burner. Procedure: take a small portion of Lascine's extract in a test tube. To this, add a small amount of concentrated nitric acid using a dropper. Boil the contents of the test tube over a Bunsen burner and cool. Using another dropper, add silver nitrate solution to the test tube. If the organic compound contains chlorine, the sodium chloride formed during fusion reacts with silver nitrate to form a white precipitate of silver chloride. If the organic compound contains bromine, the sodium bromide formed during fusion reacts with silver nitrate to form a pale yellow precipitate of silver bromide. If the organic compound contains iodine, the sodium iodide formed during fusion reacts with silver nitrate to form a yellow precipitate of silver iodide. Now, using another dropper, add the excess of ammonium hydroxide to the precipitates. Silver chloride is soluble in ammonium hydroxide. Silver bromide is sparingly soluble in ammonium hydroxide. Silver iodide is insoluble in ammonium hydroxide. Carbon disulfide test. Materials required: Lascine's extract, dilute hydrochloric acid, carbon disulfide, chlorine water, test tube, and droppers. Procedure: take a small portion of Lascine's extract in a test tube. Using a dropper, add a small amount of dilute hydrochloric acid to acidify the Lascine's extract. Using another dropper, add a small amount of carbon disulfide to the test tube.
carbon disulfide forms a separate layer above the Lasine's extract. Now, add freshly prepared chlorine water using another dropper and shake the test tube vigorously. If the organic compound contains bromine, the sodium bromide formed during fusion is oxidized to bromine, which is dissolved in carbon disulfide and imparts orange color to the carbon disulfide layer. If the organic compound contains iodine, the sodium iodide formed during fusion is oxidized to iodine, which is dissolved in carbon disulfide and imparts a violet color to the carbon disulfide layer. Precautions: handle the apparatus and chemicals carefully. Use droppers to take reagents from the bottles. डिटेक्शन ऑफ मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्रूसिबल के अंदर कंबस्ट करें, जलाएं। अब आपकी बुक में स्पेसिफाई मेंशन है प्लैटिनम क्रूसिबल। अब लाजमी नहीं है प्लैटिनम क्रूसिबल, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। किसी भी क्रूसिबल के अंदर आप उसको कंबस्शन करें, अगर कोई रेजिड्यू बचता है तो डेफिनेटली उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, अगर रेजिड्यू नहीं बचता तो उसके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होगी। वो कैसे? चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जब हम उसकी कंबस्शन करेंगे, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी, तो बाकी आपके पास रेजिड्यू नहीं बचेगा। सो नेक्स्ट वन, होमवर्क। आप लोग ये करेंगे कि जो आपके पास अल्कोहल फैमिली है उसके पहले 10 मेंबर की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, एक। दूसरा, हाँ, स्टूडेंट शुड रिमेंबर द प्रोसीजर एंड रिजल्ट ऑफ ऑल द डिटेक्शंस टेस्ट, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए है, हेलोजेंस के लिए है, कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये सब टेस्ट, इनके प्रोसीजर और एंड रिजल्ट्स पता होने चाहिए। सो ये आज आपका लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।